हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी ये हमारा पहला वीडियो है और हम इस पे अपने स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अभी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ठीक है, हिस्ट्री का आज का जो करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आज 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 क्या पढ़ाया गया बच्चा। पीएससी करंट अफेयर। तो आज डेट क्या था? 13 दिसंबर 2022, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे आज न्यूज़पेपर में क्या था, उसके आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। और तो ओ भाई, हाँ चुप लग गया। तो आज क्या था? आज था 13 तारीख। ओ आज का थॉट क्या है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, या हम कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं ना। अगर धीरे ही चल रहे हैं, हम धीरे ही चल रहे हैं, तो जहाँ जाना है वहाँ उस रास्ते पे तो हैं, या किसी और रास्ते तो नहीं निकल लिया। अरे इधर चलो, जाना इधर है, चलो इधर। तो सही रास्ते पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। और कल से हम क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर का आपको मैं जो इम्पोर्टेंट होगा वो रीडिंग भी मिल जाएगा, लाइव भी मिलेगा। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट होगा वो प्रोवाइड करूँगा मैं। इंडिया एंड चाइना एंड चाइनीज सोलर क्लैश नियर अरुणाचल बॉर्डर, इम्पोर्टेंट था। अरे गलती हो गया। Drone uses advantage in agriculture. Drone uses advantage in agriculture. Which are the area where it helps? It helps in preparing for wealth, gleachers, crop spraying, geo fencing, crop monitoring, monitor growth, plantation, soil and field analysis, livestock management, check crop health, अवॉइड केमिकल ओवरयूज़, ये सारे क्या हैं एडवांटेज हैं ड्रोन के। ड्रोन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर में, क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर फॉर वाटर ग्लीचर्स,
weather glitches, crop spraying, geofencing, monitor growth, plantation, soil and field analysis, livestock management, check crop health, avoid chemical overuses. इससे क्या है, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। 40 ऐसे यूज, ड्रोन के 40 ऐसे यूजेज जो हम लोग किस किस जगह कर सकते हैं। हम लोग यूज कर सकते हैं practical appliance for unnamed aerial vehicle, emergency services and disasters recovery, security services में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर में यूज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं, बिजनेस एंड कॉमर्स में कर सकते हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, एंड अर्बन प्लानिंग, रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं जिसमें हम ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। और क्या है, मीनिंग एंड मेजर्स टेकन टू कंट्रोल ऑफ पब्लिक disease health, meaning and measures taken to control of public disease health, meaning of public health. It refers to approach to medicine that is concerned with the health of the community as a whole. It refers to approach to medicine that is concerned with the health of the community as a whole. Meaning and measures taken to control of public diseases and health. First, promotion of primary health facilities. Promotion of it is three types of meaning and measures taken to control of public disease health. First is promotion of primary health facilities. Second is private public partnership. Third is increase in health expenditure. Increase in health expenditure. First, let's elaborate the first one. During the period of 1951 to 2000, the number of hospitals and dispensaries increased from 9,209 to 32,156 and 35,406 in 2013. Nursing personnel from 18,054 to 14,81,270 and 24,30,275 in 2013. Nursing personnel from doctors from 61,800 to 6,60,810 and 9,36,488 in 2014. Wow, it's a development. PPP, private public partnership. PPP, private public partnership, is encouraged to ensure reliability, quality and affordability of both drug and Medicare. And third one is increase in health expenditure. It increased the affordability of people of both drugs and Medicare. Reasons for insufficient health infrastructure. क्या क्या reasons हैं जो जिसकी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है रूरल एरिया के infrastructure. First one is insufficient medical infrastructure. First one is insufficient medical infrastructure. First one is insufficient medical infrastructures. Insufficient medical infrastructure. Wait. And second one is lack of basic medical facilities. And the third one is no access to specialized medical care. Only 1/5 of hospitals are located in rural areas
of 70% of India's population which resides in rural area. Lack of lack Second one is lack of basic medical facilities. Second one is lack of basic medical facilities. Public health centers of rural areas does not have basic facilities like x-ray or blood testing facility. Third one is no access to a specialized medical care. No access to a specialized medical care. Rural people does not have access to a specialized doctors. Rural people does not have access to rural people does not have access to does not have access to rural people does not have access to realized doctors, specialized doctors. Sorry. Drawback of healthcare system. What are the drawback in healthcare system? What are the drawback in healthcare system? First one is insufficient medical infrastructure. Lack of manpower. Poor sanitation facility. Malnutrition. Limited role of private sector. Communicable disease. Classification of directive principles of a state policy. Classification of directive principle of state policy. Classification of directive principle of state policy. Directive principles. Directive principles of a state policy. First one is socialist principle. Second one is Gandhian principle. First one is socialist principle. Second one is Gandhian principle. And the third one is liberal principle. First one is socialist principle, Gandhian principle, liberal principle. I feel thirsty. Okay, let's go with this. आर्टिकल 38 सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? जो आर्टिकल 38, 39 एंड 39A, 41, 42 एंड 43 एंड 47. गार्डियन प्रिंसिपल्स में आर्टिकल्स आएंगे 40, 43, 43B, 46, 47, 48. लिबरल प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? 44, 45, 48, 48A, 49, 5D and 51. These are the classification of directive principle of state policy. Article related to DPSP. Duty of a state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. Articles related to DPSP. Definition of state. Application of the principle contained in this part. A state to secure the social order for the promotion of welfare and people. Certain principle of policy that will be followed by the state. Sustainable development goal. Here the very important topic people need to know about this is what was it is 30 ऐसे टेक्नोलॉजी जो आगे फ्यूचर में आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे. क्या क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और अच्छे मतलब और उसको बेहतर किया जाएगा. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ओके, मोबाइल सोशल इंटरनेट, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इमर्सिव मीडिया, रोबोट्स, ऑटोमेशन, 3D प्रिंटिंग एंड CRX. Sorry.
geospatial tech, clan tech, wireless power, new touch interfaces, collaborative tech, nanotechnology, advanced material, smart cities, as computing, faster, better internet, proximity tech, new screen. Move on the next topic. Okay, people. Here's the a very important topic. What is terrorism? What is terrorism? Terrorism is a controversial term. All definitions agree that terrorism involves act of violence. टेररिज्म कहाँ कैसे इन्वॉल्व होता है? जो लोग वायलेंस करते हैं उसे टेररिज्म कहते हैं. टेररिज्म डिफर्स फ्रॉम criminal violence because it aims to achieve political change. Terrorist claims to fight for a justice cause, but opponents of that cause regard them as ordinary criminal. Whether we describe something as terrorist depends on our view of a legitimacy of the cause. Legitimacy of the cause. टाइप्स ऑफ टेररिज्म. कितने टाइप के टेररिज्म होते हैं? टाइप्स ऑफ टेररिज्म: स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, क्रिमिनल टेररिज्म, एथनिक टेररिज्म. Challenges to external security in India. What are the challenges to external security of India? First, in China-Pak axis, militarization of space, cross-border threat, maritime security, threat from cyberspace, development in Middle East, competition for scarce resources, challenges from hostile neighbors. UN Security Council structure locks international system. Use of force at UN is decided by UNSC. Five permanent members have the right to veto a draft resolution. To adopt a draft resolution, none of the payment members should veto it, and 9 countries should vote in favor. China and Russia have voted for draft resolution on Syria since 2011. The US has used its veto right 42 times for Israel since 1972. सो पीपल, डेली न्यूज़ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे. थैंक यू. सब्सक्राइब कर लेना. और इसका वीडियो के एंड में, मतलब अभी यहाँ आई बटन पे आपको एक और वीडियो लिंक मिल जाएगा. इससे आप उसका जो जैसे इम्पोर्टेंट नोट्स होता है ना, वो चीज़ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा. आप उसे देख कर चेकआउट कर लेना एक बार. थैंक यू. फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और कोई सजेशन हो तो वो बता देना. थैंक यू.